अच्छा, तो I'll just stop the share for a time. आपका मैं रिएक्शन जानना चाहता हूँ आप लोगों ने। Sir, I think they are training for the swords fighting, or because they create the voice of the swords like that, and they have to play some moves so that they make noise of that move only, like head or legs only in the first and the last. It is training like if he was bitten or in a sword fight. And Okay. Anybody else? So they have to, yes. So they have to create very real life like situations in whatever they're acting, but also not ensure that the other person does not get hurt. So they have to train very rigorously for That's that. a very good observation. And but at the same time, they have to manage that it looks very real. Like the reactions have to be just like as they would if they were hit for real. Also, their movements are very agile and they have to be very focused and very present in what they're doing so as to do it correctly. That's a very good observation. Yes, If you sir. So notice, she I was about moved to point out the हाँ बोलो. similar thing that they were first trying to work on a lot of momentum, but being light at the same time. Then they were covering the major portion of the stage. Then they decided to work on reflexes somehow, and then they were working on energy, a lot of energy. Then that's what I observed. push wonderful, really wonderful. And what Anushka said about uh, training so that they don't hurt each other. शुरू में उसने स्टिक लगा के दिखाया कि मैं यहाँ मारूं. Indirectly, she gave a hint. These are the places where I'm subscribed. So you have to protect yourself from those locations. And then, of course, they must have practiced. Each of those exercises you must have practiced. They were doing it for video. So there were actually two instructors. One is the lady and one other gentleman who was sitting in one corner. He'll come in the next thing. So if you go through this video and go step by step, you'll be able to tell कि क्या-क्या कौन-कौन से exercise कि आपने देखा जो कलाबाजी कर रहे थे. Lot of people can do cartwheels. It's something that people can do very easily. But the actors यहाँ पे जो हिंदुस्तान में एक्टर हैं, नॉर्थ ईस्ट के एक्टर्स आर एज एजाइल, बट नॉर्थ एंड साउथ और ईस्ट और वेस्ट, नॉर्थ एंड साउथ एंड वेस्ट के एक्टर्स इतने एजाइल नहीं है. हालांकि मराठी एक्टर्स थोड़े बहुत एजाइल होते हैं, बट बॉडी फिटनेस में इंडियन एक्टर्स में जो नॉर्थ ईस्ट के हैं, मणिपुर के स्पेशली, मणिपुर जो है वो इधर गढ़ है, तो वहाँ के जो एक्टर्स आपको मिलेंगे बहुत जबरदस्त, आपको ट्रेनिंग वाले मिलेंगे. तो नॉर्थ ईस्ट का अगर आप कोई वीडियो देखोगे रतन श्याम है, तो एनएसडी का डायरेक्टर भी ले चुका है. तो जब एनएसडी में पढ़ता था तो उसको उसको हिंदी नहीं आती थी, तो उसको एक भाला समा दिया जाता बस कि तुम दरबार बन जाओ. बाहर जाके उसने इतना नाम कमाया है, उसको पद्मश्री भी मिला है यहाँ पे, और विदेशों में उसका इतना काम सहारा क्या बोलते हैं सराहना हुई है इतनी ज्यादा कि become one of the icons of Indian theatre narrative. Okay, next, who wants to say something? एक्चुअली सर जब वो किक कर रहे थे ना, जब वो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन को भी एक तरह से ट्रेन कर रहे थे, क्योंकि जब वो अपने मसल्स पे जितना कंट्रोल रखेंगे ना तो कांपेंगे नहीं वो मसल्स. जब वो एक्टिंग करेंगे तो वो मसल्स को भी एक तरह से ट्रेन कर रहे थे. तो आप फिटनेस फ्रीक हो क्या? सर आई डिडंट अंडरस्टैंड व्हाट यू सेड. मैंने कहा आप जिम वगैरह जाते हो क्या? हाँ यस सर. हाँ, तभी आपको ये टर्म्स पता है, न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन. So for other students, neuromuscular is also known as motor control or muscle memory.
It is the ability of the nervous system to efficiently recruit a muscle or a group of muscles in order to perform a specific task unconsciously. Reflex ban jata hai. It's as if your whole body is under your mental control and each muscle takes command from you. So that's a very good thing. That it was it Nitin Yadav who spoke just now? Yes, sir. So that was very good. Okay. So moreover, Anybody I else? feel they were even trying, they were also working on their flexibility. Like some of the exercises they were quite flexible, if like, and I think that would be quite helpful. For example, there are some theatrical plays which are quite musical. For example, Broadway is a musical theater or something. Usme they might have to attain some graceful movements, and for that flexibility really matters. Very good. I'm very impressed with the present batch of students who are taking part in that. Good. All of you doing very good, intelligent reaction. Anybody else wants to say something? Also, sir, they were doing the same moves at least for 2 to 3 times because they know that during the shoot they have to do the same. और दूसरा ऑडियंस को भी तो समझ में आए कि क्या करना है. दो चार बार नहीं करेंगे तो आपके दिमाग से निकल जाएगा. Yes, yes. एक थिएटर की बहुत इम्पोर्टेंट चीज है कि to be able to communicate is very important. Therefore, what they were doing was also done. Anyone else wants to react? Okay, I'll move on to the next. Can you see this presentation? Can you see this slide? Yes, sir. Okay, now you will see the vocal train coming voice projection from different parts of the body. Okay. My job is to make college. So we are on your presentation screen. Huh? So we Yeah, can you can, I know. I have to do a new share then on that. okay. कभी कभी चीजें गुम हो जाती. I stop sharing. Can you see this? Yes, sir. Yes. That lady with two hands in front of her, you can see her? Can you see this lady? Yes, sir. Yes, sir. Easier because students have a lot on their. Di tenermi la mano con la sua voce e di far emergere il suo discorso da quella parte del corpo che è più vicino alla mia mano. Solo questo, tenere la mia mano con la sua voce e rispondere ai movimenti della mia mano, cioè reagire alle sue azioni. तो दोबारा एक बार देखते हैं because it's covering. Di tenermi la mano. So to hold my hand, this is voice and let his speech. Let us go from the beginning. He says, I'm going to ask Jens to hold my hand. Di Hold my tenermi hand with his la voice. mano Okay. पढ़ते जाइए साथ साथ. con la sua voce e di far emergere il suo discorso da quella parte del Emerge from the different parts of his body.
corpo che è più vicino alla mia mano. Solo Which is nearest to my hand. questo. Tenere la mia mano con la sua voce e And answer the movement. पढ़ते जाए, ठीक है वो चीज़ है. rispondere ai movimenti della mia mano, cioè reagire Okay. alle sue azioni. Demonstration. The voice reacting to a stimuli. Se nu var forunderligt, det er gået mig i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne figur. Billedet af Eva, moren, jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det, men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø. Og jeg dør gerne, hun gør mig det lidt sen nu, og forunderligt det er gået mig i stedet for, at jeg former hende. Giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden. Med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva, moren. Jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det. Men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun kommer det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for, at jeg former hende. Giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden. Og med mig dør også min drøm, den skønne figur. Billedet af Eva, moren, jeg ser det nu. Hun ønsker det ikke, hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun kommer det lidt til nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for, at jeg former hende. Giver hende skikkelse, er det hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva, moren. Jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det. Men hun ønsker det ikke, hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø. Jeg dør gerne, hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse? Hun har forført mig til døden, og med mig dør også min drøm, den skønne figurbilledet af Eva, moren, jeg ser det nu. Er det hende? आपने देखा है स्कल की तरफ क्या तो आवाज कैसे बदल गई, जैसे दिमाग के अंदर से आवाज रेजोनेट करती है. चेस्ट पे थी तो आवाज कुछ और. एक तो ये था कि हाइट ऊपर नीचे करने से फर्क पड़ रहा है, और कहाँ पे हाथ लग रहा है उससे ही फर्क पड़ रहा है. Hende, der former mig og giver mig skikkelse. Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden. Med mig dør også min drøm, den skønne figur, billedet af Eva, moren. Jeg ser det nu, og hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg forme det, men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun kommer det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse? Hun har sine hænder omkring mit hjerte. Gør det frit og gør mig tom. Forført mig til døden, og med mig dør også min drøm. Men hun ønsker det ikke. Hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Hun vil hellere, at jeg skal dø, og jeg dør gerne. Hun gør mig det lidt. Se nu, hvor forunderligt det er gået mig, i stedet for, at jeg former hende og giver hende skikkelse. Er det hende, der former mig og giver mig skikkelse? Hun har sine hænder omkring mit hjerte og gør det frit og gør mig tom, forført mig til døden, og med mig dør også min drøm. Den skønne figurbillede af Eva, moren, jeg ser det nu, hvis jeg har kræfter i hænderne, kunne jeg men hun ønsker det ikke, hun vil ikke, at jeg skal gøre hendes hemmelighed synlig. Giver hende skikkelse. Okay, now reaction from all of you. So this was something similar to the first video that we saw, like as the person was moving his hand farther away, he was speaking louder, and as it was closer, he spoke lower. And then in the starting, on one slide, you had written that voices can come from different body parts. I think this was demonstrated in this video as well. And we said it very clearly also. That this is what
could you feel that जैसे जैसे एक्टर आवाज बदल रहे थे तो वो आवाज सही था? एंड में लगा थोड़ा सा जैसे उसने मिस्टेक कर दी हो। हाँ? वैसे सर बिल्कुल एंड में ऐसा लगा जैसे उसने थोड़ी सी मिस्टेक कर दी हो, क्योंकि सर जितनी हाइट पे वो हाथ था ना, बिल्कुल स्टार्टिंग में उससे वो ज्यादा आवाज निकाल रहा था। थोड़ी सी मतलब लगता है मिस्टेक हुई है। एक सर एक चीज समझ में नहीं आई, जैसे उसने चेस्ट के पास लगाया जब तो उसकी आवाज कम थी, लेकिन स्कल के पास उसने तेज क्यों की? अब ये तो देखो हर एक एक्टर का अपना रिस्पॉन्स होता है। मुझे तो वो सर के ऊपर जैसे अगर मेरे दिमाग में कोई चीज घूम रही है, हाँ, तो वो आवाज जैसे गूंजती है तो मुझे लगता है इट इज रेजोनेटिंग इनसाइड माय स्कल। तो वो उसको वो फीलिंग है। वो तो ये तो देखो ये एक चीज मैं बता दूं, इसमें ये एक्सपेरिमेंट्स हैं। देयर इज नो फाइनल आंसर। हर एक एक्टर अपने हिसाब से रिस्पॉन्ड करता है। और आप ये सोचो फ्लो में है, लाइनें उसको पहले किसी प्ले की लाइनें बता रहा है, कुछ कह रहा है, और उस लाइनों के साथ वो आवाज को वेरी कर रहा है। तो ये जो चीज है इट इज क्या बोलते हैं, एक रिश्ता है बिटवीन द एक्टर एंड द हैंड, और वो उसको रिस्पॉन्ड कर रहा है। somebody else will be doing it very differently for each other. आप करोगे तो आप दूसरी तरह से करोगे। अच्छा आप बाहर से देख रहे हो, लेकिन आप अगर बॉडी के अंदर हो तो आपके लिए क्या चीज कैसी दिखती है, क्या महत्व रखता है, उसका मतलब कुछ और है। So it's not just physical relationship, it's also an emotional relationship with the hand and where it is and how different parts of the body respond, right? Yes sir. Thank you sir. Anybody else? सर एक चीज मुझे मतलब डाउट है कि उसने अपना बॉडी मतलब बहुत लूज रख रखा था, और जब वो जैसे से उसका हैंड मूवमेंट हो रहा था वो उस हिसाब से एडजस्ट कर रहा था, तो मतलब आपको अपना वॉइस उस हिसाब से फिर वो मतलब फील कर पा रहा था अपने मसल्स का, इसलिए उसने लूज रख रखा था। मैं आपकी बात नहीं करता, तुमसे बताइए। तो जैसे वो उसने मसल्स लूज कर रखे थे, अपनी बॉडी स्टिफ नहीं कर रखी थी, हाँ तो हाँ, जैसे से उसके जो डायरेक्टर था जो भी उसने मूवमेंट अलग मसल्स पे लेके गया, तो आई गेस वो हर उस मसल से फील कर पा रहा था, उस हिसाब से फिर अपनी वॉइस चेंज कर रहा था। that's it. Somebody else wants to comment on what Sahil said just now? Sir, I think it was more like कि डायरेक्टर के हैंड पोजीशन के अकॉर्डिंग उसको अपनी पिच बदलनी पड़ती थी, कि मतलब हाउ सिंगर्स हैव देयर चेस्ट वॉइस, हेड वॉइस वगैरह। तो मतलब अगर डायरेक्टर वाज रोमिंग हिज हेड लाइक हैंड ओवर द एक्टर्स हेड, तो द एक्टर इमीडिएटली अपनी पिच और अपनी एम्पलीट्यूड थोड़ी हाई कर देता था टू एज अ रिस्पॉन्स, और मतलब चेस्ट पे हाथ घुमाता था तो उसकी आवाज डीप हो जाती थी बिकॉज इट वाज लाइक द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम हिज चेस्ट, एंड देन देयर इज द लाइक स्टमक पे मतलब द वॉइस वाज कमिंग फ्रॉम हिज डायफ्राम, तो लाइक दोस वेरिएशंस। So your own relationship with your body is the factor, right? Somebody else wants to comment on what Aishani just said? Sir, I want to, what I feel is like when the director were moving hands across the different parts of the body, the tone changes as in the part respond to the body. Like stomach is the softest part of our body, so the voice became soft and bit low and sweet. But as in when it moves to the skull, which is the hard part, No. the voice becomes harder and bit louder. That's your observation. But suppose you were doing that exercise, would you be thinking like that? I mean, this is I have not done it. Just I feel it because as in when we just means I have when I was small, these exercises I used to practice and the voice changes. I feel means if Somebody we wants roam, to comment on what Yatish just said? So it is the way he feels as though the voice is coming from. तो ये जो उसका रिस्पॉन्स होता है उस टाइम इमोशनली होता है,
वो सोचता नहीं है, लेकिन आप जब बाहर से देख रहे हो तो आपको उसको आप रैशनलाइज कर सकते हो उसको। जैसे क्रिकेटर होते हैं जो अगर बॉलिंग का करते हैं तो उनका वीडियो बनाते हैं कि ट्रेनर्स हैं, और वो वीडियो बनाने के बाद तो दोबारा जब अपने वीडियो देखते हैं तब उनको समझ में आता है कि मैंने इसको कहाँ से, ये मैंने कहाँ से हाथ ठीक घुमाया नहीं घुमाया, क्या गलती की। या बैट्समैन देख सकता है कि बॉल इधर आ रही थी, मैंने उधर मारा। सो देयर आर टू थिंग्स, वन इज व्हेन यू आर इनसाइड एंड वन इज व्हेन यू आर आउटसाइड, राइट? सो राइट नाउ ऑल ऑफ यू आर लाइक यू आर ऑल आउटसाइड, बट जो एक्टर अंदर से ही अगर खैर कभी आप लोगों को मौका लगेगा मेरे साथ लाइव थिएटर करने का, I will invite all of you to come and work with my group wherever it is. तो ये सब चीजें जो आप लोग कुछ करोगे तो आपको उसका मजा ही कुछ और है। लेकिन अभी भी आई एम श्योर आपको मजा तो आ रहा है देख के। आ रहा है कि नहीं आ रहा? Yes, sir. नितिन, you want to say something? No, सर मैं सिर्फ यस कह रहा था, आपने पूछा था ना मजा आ रहा है क्या? हाँ हाँ, तो सर मैं यस बोल रहा था। Okay. Now who's going to read this? Sorry. Okay. So you go ahead. Working in silence, option 2. Grotowski stated that an actor must begin by doing nothing. He believed that if a group of actors could remain completely still for several minutes without disturbances, then they would be able to concentrate more intensely and use it as a creative passage. Right. This we already, I think ये slide repeat हो गई। आगे पढ़िए। आप ही पढ़िए, अभी कौन पढ़ रहे हैं? Yeah, Poor Theatre 1. Grotowski differentiated between what he called the rich theatre and the poor theatre. The rich is one that is rich in faults. It draws upon other disciplines but fails to produce a work of art that has integrity. The rich theatre, in its attempt to compete with film and television, uses mechanical devices that are more appropriate for film and television. हम पढ़ चुके हैं ना पहले? नहीं। Not this one. We read the slide before this. The silence one to for sure. नहीं, कल की क्लास में तो नहीं पढ़ा था ये वाला? नहीं ना? नहीं। ये पुअर थिएटर और रिच, इसका पुअर थिएटर क्यों है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये डेफिनेशन बहुत इम्पोर्टेंट है कि रिच वैसी में नहीं है, बट इसी वजह मैं बता चुका हूँ सर, स्लाइड नहीं पढ़ी थी। ओके, नेक्स्ट। Okay, now you see, ग्रोटोस्की ये भी बिलीव करते थे कि सेट जो है ज्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए। ये सेट में क्या क्या होता है, कभी फर्नीचर होता है, कभी आर्च होती है, कभी कुछ होता है, कभी कुछ होता है, ठीक है? तो ये उसके हिसाब से क्लटर्ड सेट है। So you saw this was another cluttered set with lot of drums and all other चीजें। Just look at this. कितने सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं, कितना सारा कचरा है। तो थिएटर का कंपोजिशन सिंपल और स्ट्रेट फॉरवर्ड होना चाहिए, इतना ज्यादा क्लटर्ड नहीं होना चाहिए, राइट? डू यू एग्री और नॉट? Yes, sir. Yes, sir. Who's going to read this? Sir, I'll go. Okay, go ahead. Grotowski proposed poverty in the theatre, one in which a new space is designed for actors and spectators for each new work. Next. So I can go next. Go ahead.
He eliminated costumes, lighting, makeup, and music from his theater and insisted that the actor's physical inflexibility is infinitely more interesting than costumes or makeup. Okay. Any doubt about this? Does anybody want to comment on this? चलिए आगे अगला कौन पढ़ेगा? So I can go. Go ahead. Direct lighting and shadows can be utilized effectively without the need for elaborate lighting schemes and mechanisms. ठीक है? Yes. Next. The actor can make his own music with his voice. ठीक है, आपके शरीर से ही आप अपने अंदर, जैसे अभी आपने देखा कि एक्टर अपनी आवाज अपने बॉडी से ही निकालते हैं और अलग अलग बॉडी के हिस्से से अलग अलग आवाज, ठीक है ना? ओके, नाउ हु विल बी द नेक्स्ट? ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सारा पूर्ण थिएटर 1 2 3 आप लोग पढ़ लीजिएगा इसके बारे में। I will go, sir. To this concept of poor theatre, Jerzy Grotowski and Afish added the concept of the priesthood or sacredness of the actor. अच्छा, अब ये देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट चीज है जो मैं इसके बारे में क्लास में बोला भी था। वो खुद तो अनबिलीवर था, लेकिन उसको कंपेयर कर रहा है कि चर्च में जो सेक्रेड, जो प्योरिटी होती है और जो सीरियसनेस होती है, तो वो उसको एक्टर को उसके हिसाब से कंपेयर कर रहा है। उस तरह की सीरियसनेस जो आप लोग जो रिलीजन में बिलीव करते हो, वो जो आप वहाँ लेके आते हो, वो आप स्टेज पे लेके आओ, है ना? नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? So मैं पढ़ता हूँ. पढ़िए। When the actor entered the sanctity of the performance space, then a special event occurred. Sanctity. Sanctity of performance space, then special event occurred, much like the mass in the Catholic Church. Okay. You understood what it means? अभी आप समझ रहे हैं? Not exactly, sir. सैंक्टिटी होता है प्योरिटी, जो कोई चीज बहुत, जैसे गंगा जी, उसकी सैंक्टिटी है ना, तो उसी तरह से चर्च की जो सैंक्टिटी है, वो उसको आप हिंदुस्तान में आप क्या करते हैं लोग शुरू में, मराठी स्पेशल स्टेज में क्या करते हैं? पहले गणपति पूजा करते हैं, राइट? Yes, sir. उसके बाद परफॉर्म करते हैं, तो उसकी सैंक्टिटी को एक्नॉलेज करते हैं। ऐसे ये लोग कंपेयर कर रहे हैं चर्च के साथ। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? So I can read. Go ahead. It was in this space, in the holy relationship between the actor and the audience, that an audience was challenged to think and be transformed by theatre. ठीक है ना? कल मैंने एक बड़ा जबरदस्त नाटक देखा था परसों, फैसल अल्ताजी का। इट वॉज अ मर्डर मिस्ट्री, और एंड में ये जब खत्म नहीं हुआ था, तो फैसल ने बोला कि हमने तो इतना ही तैयार किया है, बाकी आप बताइए आगे क्या होगा। तो कुछ लोगों ने कहा कि मर्डर ये हो सकता है या वो हो सकता है। मैंने कहा इसको ऐसे ही छोड़ दो, इनकम्प्लीट प्ले को ऐसे इनकम्प्लीट दिखाओ, और फिर ऑडियंस के सवाल आप हर बार पूछो। किसी और ने बोला कि भाई ऑडियंस वांट्स क्लोजर। तो मैंने एक चीज कही जो लोगों को बहुत पसंद है, मैंने कहा कि अगर आप लोग इसको ओपन एंडेड नहीं छोड़ते तो ऑडियंस का रिएक्शन जैसे अभी आ रहा है, सारे लोग पार्टिसिपेट कर रहे थे, जैसे आप लोग अभी पार्टिसिपेट कर रहे हो कि ऐसा होना चाहिए था, ऐसा, मैं वो अपॉर्चुनिटी आपको खत्म हो जाएगी। थिएटर में हम लोग चाहते हैं कि हमारा इंटरेक्शन हो ऑडियंस के साथ, लोग नाटक देख के चले जाते हैं। तो कितनी अच्छी, तो लोगों ने कहा बाकी ये बात तो सही है, इसको इनकम्प्लीट होने से कम ये तो है कि एक्टर्स और ऑडियंस के बीच में एक तरह का रिश्ता कायम हो गया।
बाकी मर्डर में तो आप कहानी तो कहीं भी घुमा के दिखा सकते हो, इससे किया या उससे किया, और कोई रीजन बना सकते हो। तो समटाइम्स इन थिएटर हम लोग जब नुक्कड़ नाटक करते थे तो वी नेवर यूज्ड टू, समटाइम्स वी यूज्ड टू लीव इट टू द ऑडियंस। हमने तो उसको खत्म किया ही नहीं। अब आप सोचिए कि क्या होना चाहिए था, अपने घर में जाके सोचिए, लोगों को सोचने में मजबूर करो। ये बर्टोल्ड ब्रेक्ट की थ्योरी थी, दे शुड बी सच दैट पीपल शुड बी फोर्स्ड टू थिंक अबाउट। ओके, who will read the next paragraph? In this sense, Jerzy Grotowski was one of the key figures in the development of political theatre in the 20th century. अब आपने देख लिया ना पॉलिटिकल क्यों है, क्योंकि इसमें आप लोगों को सोचने का मिलता है, मौका मिलता है, सोसाइटी के बारे में, हर चीज के बारे में। ओके, अब पॉलिटिकल थिएटर पे आ गया। Who will read? So can I? Go ahead, please. His theatrical productions often contain political and social themes. Okay, अगला भी आप पढ़ लो। The actor, depending only on the natural gifts of voice and body, could bring the sacred rituals of theater and the themes of social transformation to the audience. समझ में आ गई आपको जो आपने पढ़ा? एक बार मन में पढ़ के देखो। Somebody else wants to explain this paragraph? ये वही है जो आपने अभी एक्सरसाइज देखी थी कि जिसमें जो एक्टर है अपनी वॉइस और बॉडी से ऑडियंस को कम्युनिकेट कर रहा है। आपको कितना कुछ कम्युनिकेट होगा, हालांकि आपको भाषा भी नहीं समझ में आएगी, फिर भी आप पता नहीं था आपको भाषा, फिर भी कितना कम्युनिकेट हो गया जस्ट बाय वर्ड्स एंड राइट। नेक्स्ट कौन पढ़ेगा? So may I? Go ahead, please. The audience became pivotal to theatrical performance, and theater became more than entertainment. It became a pathway to understanding. ठीक है ना, ये तो क्लियर है। Yes, sir. ओके, अगला भी आप ही पढ़ लो। ओके, एक शॉर्ट वीडियो है showing the directing methods adopted by the Polish theatre practitioner Jerzy Grotowski. Dramatized film version by Jordan Bosak. अब इसको देखिए, इंटरेस्टिंग, बड़ा इंटरेस्टिंग वीडियो है। एक सेकेंड। गड़बड़ होगी, 2 जगह चालू। Can you see the screen? Can you read what is written here? Yes, sir. Yes, sir.
चाहता हूँ, क्या देखा आपने इसमें? एक फिल्म बेस्ड ऑन ग्रोटोव्स्की मेथड के ऊपर स्टडी, व्हाट वाज योर ऑब्जर्वेशन? Anybody? सर वो इमेजिन कर रही थी, तो वो उससे बात करना मतलब इंटरेक्शन करना चाहती थी, बट शी मतलब उसके पास इतना करेज नहीं था, इसलिए फिर वो आखिर में रोके चली गई। ये बॉडी मूवमेंट कहाँ देखी थी आप लोगों ने? तो फर्स्ट क्लास में जब वो हैंड मूवमेंट से फिर पूरी बॉडी की हाँ, मूवमेंट। इमोशन ये सब जो निकाला है, जो ये जो एक्सरसाइजेस करने से बहुत सारी चीजें जो है आपको बॉडी मूवमेंट निकल के आता है। हम लोग जब थिएटर नुक्कड़ नाटक करते थे, एक हमने भारत सरकार का बहुत जबरदस्त नाटक किया था, भोमा। इट वॉज अबाउट पीपल पेजेंट्स हु लिव्ड इन दैट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड वेयर whatever saline and all, बहुत कुछ ठीक नहीं था। लेकिन वो हम लोग तो फार्मर्स नहीं थे, हम लोग कैसे फील करते थे? ऐसे वर्कशॉप क्रिएट करके वो जो चीजें मूवमेंट निकलती थी उनको हम फिर इंकॉर्पोरेट करते थे। यहाँ पे देखा कि जो इन्होंने एक्सरसाइज किए उसको एक फिल्म अनरिलेटेड है उससे, जो गाने के साथ उसको कितना बढ़िया पिक्चराइज किया। और ये लड़की रो रही तो सचमुच में रो रही है, एक्टिंग ही उसमें जो कुछ एक्सप्रेशन निकल के आए हैं वो सचमुच में निकलता है। ठीक है, ओके। इसकी एक और स्लाइड है, वो आज नहीं करेंगे उसको बिकॉज ओवरडोज हो जाएगा। आई वांट यू टू एब्जॉर्ब व्हाटएवर यू सीन टुडे एंड थिंक अबाउट इट। एंड देन वो लास्ट स्लाइड तो हम अगली क्लास में किसी और क्लास में, वो थोड़ी हैवी है लास्ट स्लाइड।
तो उसको आप देखोगे तो उसको कुछ और चीज निकल के, तो हर एक चीज की अलग अलग मूड या अलग अलग फीलिंग है, इसीलिए ये आई वांट यू पीपल टू mull over this. And so that's it for today. And thank you very much. It has been a pleasure teaching you in today's class. Okay. Thank you, sir. Sir, am I audible? Yeah. go Hello. ahead. Sir, I had a doubt about like I didn't got the point of political theater. Like, what is political theater basically? Political theater is theater about issues relating to life and society. It is not about party politics. Okay. It's about your social relationship. Garibi hai. जो issues politicians Okay, like, raise okay, करते like, हैं. okay, like the main goal of the theater is to like show some general matter that's affecting a society. अब देखो वो अलग अलग तरह के नाटक होते हैं. एंटरटेनमेंट थिएटर भी होता है जिसका मेन पर्पस होता है एंटरटेन करना. कॉमेडी होती है जिसका मेन पर्पस होता है हंसाना. सोशल थिएटर होता है जो सोशल इश्यूज को रेज करता है. पॉलिटिकल थिएटर होता है जो पॉलिटिकल इश्यूज को रेज करता है. इश्यूज लाइक कैपिटलिज्म, मार्क्सिज्म, सोशलिज्म, वो कहीं ना कहीं अंदर छिप के निकल के आ जाते हैं. ठीक है ना? सो दैट इज ओके. Okay, thanks for elaborating, sir. Good. That's a good question. Anybody else has a question before we close? Okay. Bye then. Good day.